Hello friends, welcome back to our class. How are you all? Fine? Yes. Now we'll go ahead in the integration. I hope you done well, practiced, recall the formulas. Have you learned this all formulas that we have done? जो हम यहाँ पे लिख के करते थे. Now I will not write it for you. You have to remember it. अगर आप रिमेम्बर नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, यू आर नॉट एबल टू डू द सम्स. क्यों? एग्जाम में आपको एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला इज नॉट गिवन, राइट? सो रिकॉल द फॉर्मूलाज फर्स्ट, keep in mind, and then go ahead with the sums of exercise 7.4. We have done exercise 7.4 question number 11 तक हमने कर लिया था. Now we'll go ahead with the example. Question number 12 is there. So, exercise 7.4, question number 12. Integration of under root 7 minus 6x minus x square dx. Okay. Now this x square is negative, so don't do that here only. क्योंकि स्क्वायर रूट में से नेगेटिव कॉमन नहीं आता है. जब भी x स्क्वायर इज नेगेटिव तब आपको बाहर लेके ही करना पड़ेगा. टेक इट आउटसाइड एंड टेक द माइनस कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो here 7 minus 6x minus x square. If you take minus common like this, right? Okay. Minus x square plus 6x. If you find the last term of this is 9. Yes. Here is minus 9 minus 7. मैंने आपको बताया था प्लस 9 माइनस 9 लिखो और माइनस 7 डायरेक्ट सेट करना आता है, देन यू कैन डू इट. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर. माइनस 9 माइनस 7 इज माइनस 16. सो नाउ दिस माइनस कीप असाइड, इनसाइड ले लो तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट में तो माइनस चाहिए नहीं, तो फिर से लेके रिवर्स कर दिया. देयरफॉर दिस इज 1 अपॉन, हियर इज 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर dx. नाउ यू नो दैट दिस इज ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मूला है, राइट? And under root of a square minus x square is the formula of sin inverse, right? वो कैसी फॉर्मूला हो जाएगी? sin inverse वाली. And therefore under root of a square minus x square is sin inverse x by a. So instead of x we will write here x plus by a 4. Plus c. That is the answer, right? Okay. Then we'll go ahead with the question number 12 is over. Now question number 13. Question number 13, integration of under root x minus 1, x minus 2. dx. Here you multiply these two brackets and confirm that it is a quadratic form. So x square minus x minus 2x minus 3x minus 1 into minus 2 plus 2 dx. Right? Now this is x square minus 3x plus 2. So here I will take and make it a perfect square. So 9x square upon 4x square becomes 9 by 4
सो एड एंड सब्ट्रैक्ट, एंड जो है उसे लास्ट में लिखा. दिस इज परफेक्ट स्क्वायर. -9 plus 8, -9 plus 8 by 4, -1/8, right? Sorry, 1/4. Yes? Okay. That way we'll write. Don't write directly. Never. कभी भी नहीं लिखना है इधर. Right? Find out and then write. So, x minus 3/2 the whole square minus 1/4. That is minus 1/2 the whole square. Now under root of, this is under root of x square minus a square. Now whenever it is under root of x square minus x square, then recall that log wali formula, right? So log of x plus under root of x square minus a square, पर हम ये नहीं लिखेंगे, we'll write this directly. It is x square minus 3x plus 2 plus c. But instead of x, it is x minus 3/2. So here I have to write x minus 3/2. Right? So that is the question number 13. So do it, then we'll go ahead with the next question. There's no need to simplify anything here, right? Let as it is रहने दो. Question number 13. Now question number 14 is integration of 8 plus 3x minus x square dx. Again here x square negative. So don't do that direct here. Keep aside, do it and then put over there. So here it is 8 3x minus x square. Take minus common and change the sign. Minus x square minus 3x. Now if you want to make it a perfect square, then the last term is 9/4 minus 9/4 minus 8. Here it becomes x minus 3/2 the whole square. This is minus 9 minus 32. Oh, it is minus 9 minus 32 is minus 41/4. Take minus inside. 41/4 minus x minus 3/2 the whole square. Yes or no? Yes? Okay? Okay. This is put here. Replace this by this. It is 41/4 है. So I will write root 41/2 the whole square. Right? Okay. Minus x minus 3/2 the whole square dx is equal to. This is 1 upon under root a square minus x square. Again it is sine phi formula, sine inverse. Therefore, sine inverse x by a plus c. Here 1 upon a नहीं आएगा, right? There's no need. So sine inverse 2x minus 3 upon root 41 plus c, because 2 is the LCM, that is cancelled. So this is the answer. Question number 14 is there. Now question number 15. So question number 15 is 1 upon x minus a x minus b dx. Right? 1 upon under root of x minus a x minus b dx is
एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, तो माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी डी एक्स. Now make it a perfect square. तो here middle term square a plus b whole square x square upon 4 into first term, that is cancel. So I will write a plus b the whole square by 4 minus a plus b the whole square by 4 plus ab. ये प्लस किया, then it is the x minus a plus b by 2 whole square minus here is a square plus 2ab plus b square plus 4ab by 4. So what is it now? This is a square plus 2ab plus b square plus minus 4ab, तो that is minus 2ab हो जाएगा. a square minus 2ab plus b square, it is a minus b the whole square by 4, right? So I write it here. It is 1 upon under root of, this is replaced by this, that is x minus a plus b by 2 the whole square here, a minus b by 2 the whole square dx. This is x square minus, this is constant, that a square. अब जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, then the formula is log mod 1 upon under root x square minus a square. तो x square मतलब x is a plus b by 2 plus, this is x plus under root of x square minus a square, but I will not write this. This right is original form लिखो, ये भी नहीं, उसका भी original. तो x minus a x plus x minus b plus c. आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी और ये भी, पर हम original form always लिखते हैं. So write down this. Okay. So this is the answer. No need to simplify anything. This is formula x square minus a square. अंडर रूट में है तो ये आंसर आएगा. That is our question number 15. Okay, question number 16 पे जाने से पहले we have to do the examples that we have not done. So we will go ahead with example 10. Start first. X plus 2 2x square plus 6x plus 5 dx. For that, what we have to do is, आपको क्या करना पड़ेगा, तो that is कि ये जो x plus 2 है, instead of x plus 2, that is a trick. There is a fixed method मैंने आपको बोला था. तो फर्स्ट में जब न्यूमरेटर में सब ax plus b फॉर्म दिया है, ax plus b, राइट, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ax plus b फॉर्म है, तो दिस ax plus b is equal to, I will write a into d by dx of this denominator plus b. ऐसे आपको लिखना है. तो that is a, d by dx is the derivative with respect to x, that is 4x plus 6 and ये 0 plus b. Now this is x plus 2, so we will write compare and find a and b की वैल्यू हमें find करनी पड़ेगी. So when we will compare, this is the 4ax plus 6a plus b, right? तो that means what? एक वैल्यू क्या मिलेगी,
तो x का कोएफिशिएंट, दिस इज x प्लस 2, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. तो x and x का कोएफिशिएंट वी विल कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x. तो 4a is equal to 1 implies a is equal to 1/4. Right? a क्या मिल गया हमें? 1/4. Now this is our constant term. तो constant term के साथ कंपेयर करो. That is 6a plus b is equal to 2. Put there a is equal to 1/4 plus b. तो b is equal to 2 minus, this is 3/2. 4 minus 3, 1/2. So I will get a 1/4 and b 1/2. Now I will write this is equal to x plus 2 upon 2x square plus 6x plus 5 dx is equal to, अब ax plus b फॉर्म जो है उसे हम कैसे लिखेंगे? तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट दिस. तो a की वैल्यू क्या है? 1/4. सो आई विल राइट 1/4 दिस अपॉन 2x square plus 6x plus 5 dx प्लस b. b की वैल्यू है 1/2. इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x square plus 6x plus 5 dx. अंडरस्टूड? क्या किया मैंने? a दिस पूरा ये जो है ऊपर लिख दो. a that is 1/4 4x plus 6 plus 1/2. Then 1/4 of this upon this. 1/2 1 upon this. Separate the denominator. अब 1/4 I1 1/2 I2. I1 and I2 का सेपरेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सो आई विल टेक दिस इज इक्वल टू I. नाउ I1 इंटीग्रेशन 4x plus 6 here 2x square plus 6x plus 5 dx. तो what is this? Here ऊपर उसकी डेरिवेटिव है. I will take let 2x square plus 6x plus 5 is t. तो 4x plus 6 dx हो जाएगा dt. That is equal to I1 is dt upon t. So you will get the integration log mod t. So I1 is equal to log mod t is 2x square plus 6x plus 5 plus c. ये I1 तो मिल गया. अब I2 की बारी. I2 में ऊपर कुछ नहीं है, तो what we have to do, नीचे जो है उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा. So how to do now? I will erase this, right? I2 is equal to 1 upon 2x square plus 6x plus 5 dx. अब कैसे करेंगे बताओ? Yes, या तो आप 2 को कॉमन ले लो या तो लास्ट में डिवाइड करो. बोथ थिंग इज राइट. सो 2x square plus 6x plus 5. 2x square plus 6x. मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 into first term. 4 9s. तो दैट इज, तो आप ओके चलेगा, चलो. इट इज प्लस 9/2 माइनस 9/2 प्लस 5. दिस इज √2x. ये किसका स्क्वायर है? चलो एक काम करते हैं, 2 को बाहर ही निकाल देते हैं बिकॉज इट इज रूट आएगा. So I will take 2 common. X square plus 3x plus 5/3 dx.
Now x square plus 3x plus 5 by 3. So x square plus 3x, the middle term is 9 by 4. So add and subtract and plus 5 by 3 as it is. Now this is x plus 3 by 2 the whole square minus 9. 9 3s are 27 plus 20. That is minus 7 by 12. You got this? Minus 7 by 12. आपका जो आएगा वो कुछ गड़बड़ आ रहा है. 3 by 2 तो राइट है. माइनस 9 3s are 27 प्लस 5 4s are 20. So it is okay dear. This is 5 by 2 क्योंकि 2 कॉमन निकाला है. That is my mistake. Okay. So minus 9 plus 10, 1 by plus 1 by 4. Right? Okay. 1 by 2 1 upon x plus 3 by 2 the whole square and 1 by 2 the whole square dx. This is what? X square plus a square. That is tan inverse की फॉर्मूला है. पहले से 1 upon 2 है और a is 1 by 2. तो 1 upon a is 2. तो फॉर्मूला में 1 upon a tan inverse x by a है. तो 1 upon a क्या होता है? 2 tan inverse x by a plus c. So I will write here c1 c2. तो 2 2 cancel. tan inverse 2x plus 3 plus c2. This is our I2. Now here I want to write the answer is 1 upon 4. I1 is log mod 2x square plus 6x plus 5 plus 7. 1 upon 2. I2 is tan inverse 2x plus 3 plus c2. Therefore c1 plus c2 is equal to c ले लो. 1 by 4 log 2x square plus 6x plus 5. 1 by 2 tan inverse 2x plus 3 plus c, where c plus c2 is c. This is a very long but very important sum. Keep in mind. Understand? आपको ये लिखना आना चाहिए. क्या लिखा मैंने? हम फिर से रिवाइज करते हैं इसे. That is 4 मार्क में 3 मार्क्स में आ जाता है ये सम. This a d by dx of 2x square plus 6x plus 5 plus b आपको लिखना है. a d by dx of this plus b. Numerator is equal to a into d by dx of this plus b. आपको लिखना होगा. अगर ये नहीं करना है तो 3 बार हम करेंगे. तो that is a d by dx of this is 4x plus 6 plus b. फिर आप a के कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिए एंड कांस्टेंट को कंपेयर कीजिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b and write down. Okay? Yes? Okay. Now we'll do some more sums for this method. I is equal to integration of x plus 3 upon 5 minus 4x plus x square under root of 5 minus 4x plus x square dx. Whether it is plus or minus that I have to check. Minus x square है. This is printing mistake. Okay? So first of all आपको
ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर चेक करना होगा. So what I will write, x plus 3 is equal to a into d by dx of जो भी न्यूमरेटर में है प्लस b. ऐसे आपको लिखना आना चाहिए. a into d by dx of this. Okay. a d by dx, that is its derivative. Minus 4 minus 2x plus b. It is minus 4a 2ax plus b. This is coefficient of x. Compare it. Minus 2a is equal to 1. This is coefficient of x. So a is equal to minus 1 by 2. Constant. Minus 4a plus b is equal to 3. A is minus 1 by 2. Minus minus plus. 3 minus 2 will get b 1. Now I will write I is equal to. पहले इसके लिए ये लिखेंगे. A की वैल्यू है माइनस 1 by 2 प्लस b की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 minus 4x minus x square dx. Instead of x plus 3 I will write this. उसमें a and b की वैल्यू इनपुट करेंगे. Now separate the denominator. That is I is equal to minus 1 by 2 minus 4 minus 2x under root of 5 minus 4x minus x square dx plus 1 upon 5 minus 4x minus x square dx. Yes or no? Okay. Okay. Now this is I1 plus I2. Let I1 is minus 4 minus 2x 5 minus 4x minus x square dx. तो हमें मालूम है कि इसकी डेरिवेटिव ही ऊपर है, तो हमें इसको t ले लेना है डायरेक्ट. 5 minus 4x minus x square t. So minus 4 minus 2x dx is dt हो जाएगा. We know that हमने ऐसे ही अरेंज किया है. Therefore I1 is dt and t raised to 1 by 2. So minus 1 by 2 plus 1 and minus 1 by 2 plus 1. This is t. t क्या है? ये. तो we will reply that 5 minus 4x minus x square raised to 1 by 2 upon 1 by 2 आगे आएगा 2. ये हमारा I1 का वैल्यू मिल गया. It is C1. Now let I2 under root 5 minus 4x minus x square dx. Here x square नेगेटिव है, तो उसे बाहर ले जाओ and do the integration perfect square. 5 minus 4x minus x square. Take minus sign common. Always whenever x square is negative, ये common method जो आपको करनी है. So that x square plus 4x, तो last term होगी 4 plus 4 minus 9, because plus 4 minus 5 करेंगे तो minus 9 मिलेगा. अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. That is equal to x plus 2 the whole square and 3 the whole square. माइनस अंदर ले जाओ तो 3 square and x plus 2 the whole square. Replace it here. 1 upon here 3 square x plus 2 square dx. It is under root a square minus x square. So under root a square minus x square is the formula of sine inverse. That means sine inverse x by a plus c2. That is the answer of I2.
नाउ I is equal to the ultimate answer -1/2. हमारा ये है 2 5 minus 4x minus x square raised to 1/2 plus c1 plus I2, that is sin inverse x plus 2/3 plus c2. So now where c1 plus c2 को आप क्या ले लेंगे? c, right? So this 2 cancel. तो our answer is minus, ये 1/2 पावर है, इसे स्क्वायर रूट में लिख देते हैं. 5 minus 4x minus x square sin inverse x plus 2/3 plus c, where c1 plus c2 is equal to c. That is 3 marks question, or it is very important. So keep in mind and try to do it of your own. So this is our example 10, question number 2, right? So same method के sums now in the exercise 7.4 में है, जो अब हम करेंगे. Now exercise 7.4, question number 16. Integration of 4x plus 1 upon under root 2x square plus x minus 3. dx. अब ये तो ऐसा नहीं है. You know why कि ये मेथड हमें वो अप्लाई नहीं करने की जरूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि इसकी डेरिवेटिव को सेट हो जाता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी डेरिवेटिव क्या है? 4x plus 1, वो ही है. तो हमें ये बी वाला कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट? वी विल डायरेक्टली टेक 2x square plus x minus 3 equal to t. So that is 4x plus 1 dx. डायरेक्ट dt हो जाएगा. That is integration of dt upon root t. -1/2 plus 1 -1/2 plus 1 plus c. That is 1/2 and t ये है, तो I will write this is also 1/2. 2 ऊपर आ जाएगा. Under root 2x square plus x minus 3 plus c. Got the answer? This is our question number 16. Okay? Question number 16 में आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है. Question number 17. It is integration x plus 2 upon under root of x square minus 1 dx. Now, you just separate the denominator. ऐसा एक सम हमने एग्जाम्पल में कर दिया है. राइट? अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वी कैन यूज इट. ये यूज नहीं कर सकते. यू नो वाई? क्यों नहीं कर सकते? ऊपर x है, 1 नहीं है. बट इफ यू डू दिस, इसको t ले लो तो x dx dt/2 हो जाएगा. राइट? तो यहां फॉर्मूला यूज नहीं कर रही है. x square minus 1 is t, so 2x dx is dt. Therefore x dx is equal to dt/2. In the first 1/2 dt root t plus 2, this is the direct formula. इसको कुछ नहीं करना है. is equal to 1/2 t raised to -1/2 plus 1 -1/2 plus 1 plus 2. You know what is the formula of under root of x square minus a square? The formula of under root of x square minus a square, log mod x plus under root of x square minus 1 plus c. Yes or no? x square minus a square की? Yes. That is
ये -1/2 + 1 कैंसल, t⁻1/2 एंड इसीलिए इसे रूट में लिखेंगे. व्हाट इज t? x² - 1 + 2 log x plus x² - 1 plus c is the answer. ओके, यस. थोड़ा सोच के करना पड़ेगा. सो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे. इट इज इजीली डन. दैट इज व्हाट आवर क्वेश्चन नंबर 17 is done. Now we'll go ahead with the question number 18. So the question number 18 is integration of 5x minus 2, 1 plus 2x plus 3x square dx. Now you just check ऊपर डेरिवेटिव दी है या नहीं. If the derivative of the denominator is given in the numerator or not. Check it out. 6x plus 2 नॉट गिवन, तो हम एडजस्ट करेंगे. अब हमारी वाली मेथड आई. सो a d/dx of plus b, that is a. This is 6x plus 2 plus b. 6ax plus 2a plus b. 5x minus 2. Compare this coefficient of x. That is 6a is equal to 5. So a is equal to 5/6. First मिला. Second, 2a plus b is equal to -2. The constant term will compare. Therefore, a is 2, 5/6 plus b is -2. 2 3s are 6. So b is equal to -2 minus 5/3. And that is what? -6 minus 5. That is -11/3. That is the value of b we got. Now, I is integration of a 5/6, 6x plus 2 minus 11/3, 1 plus 2x plus 3x square dx. A d/dx of this plus b. We'll write the value. अब separate the denominator. Is 5/6, 1 plus 2x plus 3x square minus 11/3, 1 plus 2x plus 3x square dx. Now this is what? I1 plus I2, where I1 is equal to 6x plus 2 upon अब क्या करना है, इससे तो हम क्या ले लेंगे? t. पहली टर्म तो ऐसे ही हो जाएगी क्योंकि इसकी डेरिवेटिव ऊपर है. एंड देयरफॉर लेट 1 plus 2x plus 3x square t. तो 6x plus 2 dx is equal to dt. अगर डिनोमिनेटर को t लिया तो न्यूमरेटर हो जाएगा dt. दैट वी नो. फर्स्ट ऑलवेज वैसे ही होगा, इसीलिए सम टर्म सेट की है. सो दैट dt अपॉन t और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log mod t होता है. देयरफॉर log mod t प्लस c, वेर t की वैल्यू ये रिप्लेस करो तो I1 इज log mod 1 plus 2x plus 3x square plus c1. दिस इज नंबर 1. मिल गया. I2 शुरू करते हैं. I2 is 1 upon
1 plus 2x plus 3x square dx. Keep it outside. 3x square plus 2x plus 1. Now 3 हमें नहीं चाहिए, तो 3 अगर मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो 1/3, 2/3 एंड x square. x square 2/3, 1/3. x square 2x/3 plus middle term square upon 4 into first term. तो आंसर आएगा 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/3. ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 1/3 द होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 क्योंकि एलसीएम 9 है तो हो गया माइनस 2/9. यस और नो? माइनस नहीं प्लस माइनस 1 प्लस 3. यस minus 1 plus 3, 2/9. So now I will write I2 is 1/3. 1 upon root 2/3 the whole square dx. Yes or no? Yes. Therefore, keep in mind, अगर 2 लिखा है तो रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, पर अगर x का स्क्वायर नहीं दिया है तो रूट x का स्क्वायर नहीं ले सकते. नेवर. x की डिग्री हम चेंज नहीं कर सकते इन एनी सम, वो याद रखना. सो I2 इज इक्वल टू 1/3. दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज tan इनवर्स, तो 1/a. So 3/√2. Tan inverse x upon √2/3 plus c2. 3 cancel. 1/√2 tan inverse 3x plus 1/√2 plus c2. From here, now ultimate answer we'll write. That is I is equal to 5/6. I1 is log mod 1 plus 2x plus 3x square plus c1. I2 में माइनस है, माइनस 11/3 1/√2 tan inverse 3x plus 1/√2 plus c2. Now you will write it yourself. 11, that is 5/6, this minus 11/3√2 tan inverse plus c1 plus c2, right? That is equal to c. Okay, so this is the whole sum asked in 3 or 4 marks. This is question number 18. Now question number 18. Question number 19 we'll do. It is under root of x minus 5 and x minus 4 dx is equal to 6x plus 7 under root of x square minus 9x plus 20 dx is given. Okay, now you tell me ऊपर सेम डेरिवेटिव दी है या नहीं. If the derivative is given, then no need to do this whole. But if derivative is not given, then you have to do something. But this is 2x minus 9 which is not given. Therefore, here let 6 as 7. A d by dx of plus b. Now a 2x minus 9 plus b 2ax 9a plus b is 6x plus 7. 2a 6, a is 3 minus 9a plus b is 7. 9 3s are
27 plus b is 7. So b is equal to 27 plus 7 is 34. Therefore, we'll write I is equal to, instead of 6x plus 7, 3. 2x minus 9 plus 34 upon under root of x square minus 9x plus 20 dx. Here it is. Separate the denominator. X square minus 9x plus 20 dx plus 34 under root of x square minus 9x plus 20 dx. This is our I. Now this separately will take 3i1 plus 34i2. Yes, where I1 is equal to integration of 2x minus 9 upon x square minus 9x plus 20 dx. सेम वे नीचे t है, ऊपर उसकी डेरिवेटिव आ जाएगी. सब्स्टिट्यूट करो. लेट x square minus 9x plus 20 is t. तो 2x minus 9 dx dt. So we will get I1 is equal to 1 upon root 2, root t dt. T raised to 1 by 2 upon 1 by 2. Right? That is equal to plus C1. That is equal to 2. What is t? Under root of x square minus 9x plus 20 plus C1. That is the answer of I1. Now I will get I2 is equal to 1 upon under root of x square minus 9x plus 20 dx. Keep it outside. X square minus 9x. That is 9 by 4x square. Okay, that is middle term square upon 4x square. Yes, so 9 9s are 81 by 4 minus 81 by 4 plus 20. X minus 9 by 2 whole square minus 81 minus 80 by 4 plus 80 by 4, that is minus 1 by 4. I2 is equal to under root of 9 by 2 and 1 by 4. We can say that it is 1 by 2 square. Yes. अब आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए. Yes or no? Yes. That is I2 is equal to, it is 1 upon under root of x square minus a square. 1 upon under root of x square minus a square is the same formula is log plus under root, the original, plus C2. Now I will write I is equal to I1 and I2 का आंसर मिल गया, उसे यहाँ पे रिप्लेस करो. 3 I1 is 3 2s are 6 plus 34 log, this is x minus 9 by 2 plus under root whatever is this plus C2. So ultimate answer I is 6 x square minus 9x plus 20 34 log x minus 9 by 2 plus x square minus 9x plus 20 plus C, where C is equal to C1 plus C2. Yes, interesting sum, right? Okay, now the main integration is going to be start. Integrations के sum अब start हुए, right?
सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड और आपको ये बहुत ध्यान से करना है, राइट? ओके, अंडरस्टैंड कि ये कैसे फाइंड किया. फिर इंस्टेड ऑफ 6x प्लस 7 a इंटू दिस प्लस b, a की वैल्यू और b की वैल्यू लिख के फिर सेपरेट द डिनोमिनेटर. ये सिंपल हो जाएगा. इसे परफेक्ट स्क्वायर से करना है और फिर राइट आंसर. राइट? अंडरस्टैंड? यस. So this is question number 19 we have done. Okay? So question number 20 onwards we will do ahead in the next lecture. Till then, do these sums, practice it thoroughly, stay safe, stay at home. Yes, yes. Everyone, please do the practice for the integration. नहीं तो जैसे आगे जाते जाएंगे पीछे का भूलते जाएंगे. So that make a practice of each and every method every day. टेक्स्टबुक के सम 2-3 बार करके उसे पूरा दिमाग में फिट कर लो. ओके, so we will meet in the next lecture and go ahead with this method and more sums. Till then, goodbye, stay safe, stay at home. Bye.